Assalamu alaikum students, how are you? I hope all of you will be fine and enjoying good health. Today is your maths topic conversion of time. बेटा आप सब जानते हैं कि आप सब के पास क्लॉक देख रहे हैं, देखते भी होंगे। उस क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं। एक हैंड दैट जो कि स्मॉलर हैंड होता है, इसको हम कहते हैं आर हैंड, और जो बिगर हैंड होता है इट इज़ नॉन एज मिनट हैंड, एंड द थर्ड हैंड इज सेकेंड हैंड। व्हेन द सेकेंड हैंड मूव्स फ्रॉम वन small mark to another small mark, then 1 second passes, and when the minute hand completes one rotation 1 hour passes. इसी तरह क्लॉक में 12 से लेके 6 तक का जो टाइम होता है दैट इज पास्ट, and from 6 to 12 that is 2. There is a difference between AM and PM. AM means anti-meridian while the PM means post-meridian. हमेशा याद रखें बेटा, AM जो है हम मॉर्निंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जो रात 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक के टाइम होता है उसको हम AM में लिखते हैं, जबकि जो PM का टाइम है वो दोपहर 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक हमारा कंटिन्यू चलता है। AM from midnight till noon while the PM from noon till midnight. जैसे कि अब आप मॉर्निंग में सुबह स्कूल आते हैं तो आपका स्कूल टाइमिंग है 8 AM, that is morning time, while your off time is 2 PM because the off time after the noon, ये जो आपका ऑफ टाइमिंग है स्कूल का ये दोपहर 12 बजे के बाद है, इसलिए इसके साथ PM राइट करेंगे और 2 PM भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, नाउ देयर आर द यूनिट ऑफ टाइम। एज ऑल ऑफ यू नो दैट 1 minute is equals to 60 seconds. When second hand complete one rotation, that means 1 minute passes. इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, एंड व्हेन द मिनट हैंड कंप्लीट वन रोटेशन 1 hour passes, सो दैट 1 hour is equals to 60 minutes. There are the other units of time. All of them are the units of time. 60 seconds is equals to 1 minute. 60 minutes is equals to 1 hour, and 24 hour equals to 1 day. आप सबको पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। जब 24 आवर कंप्लीट होते हैं तो दैट मेक्स 1 डे, और एज वी नो दैट 7 days is equals to 1 week, and the 52 weeks and 365 days is equals to 1 year, और 12 months also equals to 1 year. That's mean अगर according to weeks हम देखें तो there are 52 weeks in 1 year, and according to the days there are 65 days in 1 year, while the 12 months equals to 1 year. Okay, now have a look. There is a time conversion. As you know that 1 hour is equals to 60 minutes, and we convert the 2 hours in minutes. How can you convert the hours into minutes? बेटा हमेशा याद रखिए 2 hours को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। As you know that 1 hour is equals to 60 minutes. That's mean 2 multiplied by 60 minutes, that is equals to 120 minutes. Okay, now take a look. There are the examples. Convert 3 hours to minutes. As we know that 1 hour is equals to 60 minutes. Therefore, 3 hours is equals to 3 multiplied by 60. That's mean 3 hours is equals to 60 minutes. 3 hours is equals to 3 multiplied by 60 equals to 180 minutes. Okay.
Now the example number 2, convert 4 hour 25 minutes to minutes. अब बेटा यहाँ देखें, आपके पास दो यूनिट्स हैं, आवर्स एंड मिनट्स. फर्स्ट you convert the hours into the minutes. So 1 hour is equals to 60 minutes. Therefore 4 hour is equals to 4 multiplied by 60, that is 240 minutes. Then अब 240 मिनट्स में आप 25 मिनट्स इजीली ऐड कर सकते हैं बिकॉज बोथ हैव सेम यूनिट. So we add both of them, 240 minutes plus 25 minutes. The answer is 265 minutes. Okay, thanks.